Yeah. Very good evening to everybody. So today I'm going to continue the last class, that is regarding the notice. The employee, the maternity, the one who is going to get the maternity benefits, he has to give to the employer. Okay, we have already discussed. And now in today's class, we will be discussing about the employer, what employer has to do after getting the notice. So on receipt of the notice, the employer shall permit such woman to absent herself from the establishment. So the first thing which the employer has to do after receiving the notice from the woman, particular woman, he has to permit the woman to absent herself, because woman has certain rights to absent herself from the work. You know what is the period? The period is 26 weeks, right? 8 weeks before delivery and rest of the period after the delivery. Okay, so the amount of maternity benefit for the period preceding the date of her expected delivery shall be paid in advance by the employer. So whatever the amount the employer has to pay to the concerned woman, what they can do is they has to pay the amount in advance. Okay, and after what, after the woman gives the proof for it. ठीक है, woman जब वो proof दे देगी उनको कि okay, I'm pregnant and for so and so period I will not be able to come for the work. In that case, the employer has to pay the amount in advance, and the amount which is remaining, advance के बाद जो भी remaining amount है, that the woman can pay within the, sorry, the employer can pay within 48 hours. Employer कब pay कर सकता है? Within 48 hours, right? So here you have to remember is, employer ने जैसे ही notice को receive किया, receive करने के बाद वो क्या करेगा? उसको permit करेगा. किसको permit करेगा? Woman को. For what? For absenting herself from the work. ठीक है, and secondly employer क्या करेगा? He will pay the amount in advance, and thirdly advance में pay करने के बाद जो भी remaining amount है he has to pay within 48 hours. ठीक है, वो proof पेश करने के बाद within 48 hours employer has to pay the amount. और अगर वुमन ने नोटिस नहीं दिया, if the woman fails to give the notice, that means the failure to give notice under this section shall not disentitle a woman to maternity benefit or any other amount under this act if she is otherwise entitled to such benefit or amount. In any such case, an inspector may, either of his own motion or an application made to him by the woman, order the payment of such benefit. Means अगर woman ने notice नहीं दिया है तो भी employer को उसको benefit देना होगा, provided inspector will see the matter and the inspector will order the employer to pay the entire amount of benefit in the prescribed period. I think I'm clear here. Now moving to payment of maternity benefit in case of death of a woman under section 7. Now, if the woman dies, we have also discussed it earlier, if the woman dies, how will the benefit paid to her? If a woman entitled to maternity benefit or any other amount under this act dies before receiving such maternity benefit or amount, or the employer shall pay such benefit or amount to the person nominated by the woman. I have already discussed this under section 6 also. यहाँ पे क्या होता है? If a woman is entitled to maternity benefit or any other amount under this act dies before receiving such maternity benefit, अगर maternity benefit लेने से पहले वो woman मर जाती है, तो in that case I have already told you, woman ने पहले ही एक किसी को nominate करती है वो. In either case, if she is not able to receive the amount, her nominees can receive the amount. But in most of the cases, if there is no nominee, कि होता है ना कि some cases में woman ने किसी को nominate नहीं किया है, in that case also you have to remember the answer. The answer will be the legal representative. Okay, the answer will be the legal representative. So ये दो paragraph में the basic thing which you have to remember is, अगर कोई वुमन की डेथ हो जाती है बिफोर रिसीविंग द मैटरनिटी बेनिफिट, देन व्हाट विल हैपन? She will be receiving, the nominee will be receiving her benefit. Okay, and in case of absence of nominee, अगर nominee नहीं है तो legal representative will be receiving it. Okay, now coming to payment of medical bonus according to section 8. अब payment of medical bonus में क्या होता है? सभी वुमेन को मेडिकल बोनस भी मिलना चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट. आई एम कमिंग टू द लाइंस. एवरी वुमन इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट अंडर दिस एक्ट शैल आल्सो बी इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हर एम्प्लॉयर अ मेडिकल बोनस. जिसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलना है, जिस वुमेन को, उसको कुछ एक नोटिफाइड अमाउंट मेडिकल बोनस का भी होता है. दिस इज सेपरेट फ्रॉम हर सैलरी. सैलरी उसको मिलना है व्हेन शी इज एब्सेंट फ्रॉम हर वर्क.
अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो बेनिफिट, जो सैलरीज उसको मिलना है, वो आइदर वो रिसीव करेगी या तो फिर उसकी नॉमिनी रिसीव करेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मेडिकल बोनस भी है, एक नोटिफाइड अमाउंट का बोनस है जो वुमेन को मिलना चाहिए। और वो जो नोटिफाइड अमाउंट है वो उसको या तो प्री नेटल में या पोस्ट नेटल, दैट मीन्स बिफोर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड और आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, शी हैज टू रिसीव इट। ओके, now what is that amount? That amount is, the notified amount is, just a minute, the notified amount is 2500 to 3500। एक्चुअली ये क्या है, पहले 2000, पहले बहुत पहले था 1000, उसके बाद अमेंडमेंट के बाद आई थिंक अराउंड 2006 के अमेंडमेंट के बाद वो हुआ था 2500। उसके बाद 2011 में प्रपोज्ड अमाउंट है 3500। ठीक है, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द मेडिकल बोनस नाउ? इट इज 3500 व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, फॉर द अमेंडमेंट आई विल बी टेकिंग वन सेपरेट क्लास। ओके, so the notified limit is 2500 to 3500। it has been increased from 2500 to 3500। okay, dated 1912 2011। okay, now the central government may before every 3 years by notification in the official gazette increase the amount of medical bonus subject to the maximum of 20,000 rupees। central government may before every 3 years, every 3 years में अगर central government चाहे तो they can increase the medical bonus amount, but the maximum limit can be only rupees 20,000। so in the case of medical bonus, what you need to remember, that the woman is entitled to get a medical bonus and the central government within 3 years can increase the amount to the maximum of 20,000। and what is the notified amount? The notified amount is actually now 3,500। correct? so now moving to the next slide, leave for miscarriage etc according to section 9। now after the miscarriage, what leave should be, should the woman get it? okay, in case of miscarriage or medical termination of pregnancy, a woman shall on the production of such proof as may be entitled to leave with wages at the rate of maternity benefit for a period of 6 weeks। women को जो बेनिफिट मिलेगा इन द केस ऑफ मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन, आई मीन अबॉर्शन के केस में हो या मिसकैरेज हो, उसमें वुमेन को क्या मिलेगा? लीव विथ वेजेस एट द रेट ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स, 6 हफ्ते के लिए उसको लीव मिलेगा, राइट, इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ मिसकैरेज एज द केस में बी, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वेदर बी इट मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन, उसको कितने दिन का लीव विथ वेज मिलेगा? 6 वीक्स का। यू नीड टू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। you will be getting the benefit for 6 weeks, leave with wages for 6 weeks। मैंने इसको यहाँ पे भी कर दिया है टेबल में भी, मिसकैरेज और मेडिकल एग्जामिनेशन में 6 weeks। ओके, नाउ लीव विथ वेजेस फॉर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन, जो भी इनका ऑपरेशन वगैरह जो होता है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज, इसमें क्या होता है, वुमेन ऑन प्रोडक्शन ऑफ सच प्रूफ, वुमेन हैज टू प्रोड्यूस द प्रूफ एंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सच प्रूफ she will be entitled to leave with wages but the period will be 2 weeks। so यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, अगर मिसकैरेज होता है तो आपको लीव मिलेगा कितना? 6 वीक्स का लीव विथ वेजेस, और अगर ये ऑपरेशन होता है ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन, इस केस में आपको मिलेगा 2 वीक्स। ओके, am I clear here? Leave for miscarriage I'm talking about, I'm not talking about for leave for delivery, I'm talking for leave for miscarriage। okay, नाउ लीव फॉर इलनेस, अब सपोज किसी का मिसकैरेज हुआ या फिर प्री मेच्योर बर्थ दिया उसने, सपोज 7 मंथ्स में ही चाइल्ड का बर्थ हो गया, ठीक है, इफ द चाइल्ड गेव, इफ द वुमन गेव बर्थ टू अ चाइल्ड in 7 months only, okay, 7 or 8 months, that is called premature birth, or leave for illness arising out of pregnancy। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, ये क्या है कि जो मिसकैरेज हुआ उसके बाद जो रेस्ट चाहिए था वो तो ऑलरेडी एम्प्लॉयर इज गिविंग, वो पीरियड क्या था? 6 वीक्स था इन केस ऑफ मिसकैरेज, और जो ऑपरेशन के केस में क्या था? 2 वीक्स। बट उसके बाद भी अगर कोई वुमन को ज्यादा अफेक्ट हुआ है, उसके बाद उसको अगर इलनेस हुआ है, दैट मीन्स इफ शी इज सफरिंग फ्रॉम सम अदर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द मिसकैरेज और प्रीमेच्योर बर्थ, ओके, इलनेस, अगर उसको कोई इलनेस होती है उसकी वजह से, so in that case, what happens? Women suffering from illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth of child, miscarriage, medical termination of pregnancy or tubectomy operation shall on production of such proof। अगर इन सब cases में अगर वो woman proof देती है तो क्या होगा? She will be getting a leave
of 1 month. Leave with wage at the rate of maternity benefit for a maximum period of 1 month. कितने का मिलेगा? 1 month. ठीक है. ये जो आगे वाली स्लाइड है 6 weeks, ये दिस इज अ लीव इन केस ऑफ मिसकैरेज. ठीक है. दिस इज अ लीव इन केस ऑफ मिसकैरेज. बट आगे भी अगर उसकी वजह से इलनेस रहा तो शी विल बी गेटिंग लीव विथ वेजेस ऑफ 1 month. ओके. Am I clear here to everybody? Can you all give me a thumbs up if you all are clear? Right? Okay, shall I proceed? Okay. Now coming to nursing breaks. So this slide is very important for you all. Nursing breaks according to section 11. Okay. Every woman delivered of a child who returns to duty. Now we are coming after coming back to the duty. Every woman delivered of a child who returns to duty after such delivery shall, in addition to the interval for rest allowed to her, जो उसके लिए इंटरवल रेस्ट इंटरवल सी इज ऑलरेडी अलाउड. ठीक है. जो वुमेन आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड आफ्टर फिनिशिंग ऑफ हर लीव पीरियड्स हु कम्स एंड जॉइन द क्लास. ओके. उसका क्या होता है? आई एम सॉरी, नॉट जॉइन द क्लास, जॉइन हर वर्क. उसको इंटरवल फॉर रेस्ट तो मिलता ही है. उसके अलावा उसको क्या ब्रेक मिलता है? 4 ब्रेक्स मिलता है. बी अलाउड इन द कोर्स ऑफ अ डेली वर्क 4 ब्रेक्स. वो 4 ब्रेक्स उसको क्यों मिलता है? फॉर फीडिंग पर्पस टू द चाइल्ड ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन फॉर नर्सिंग द चाइल्ड. ठीक है. चाइल्ड को फीड करने के लिए उसको 4 ब्रेक्स मिलता है पर डे. अंटिल व्हेन, कब तक मिलता है? द फर्स्ट थिंग इज the woman who joins the organization after her leave is over, after the delivery, she has to get the interval for rest. Along with the interval for rest she will be getting 4 breaks. ठीक है. उसको 4 breaks मिलेंगे for nursing the child. And the child attains the age of 15 months. child जब तक, कब तक मिलता है वो? जब तक child 15 महीने की हो जाती है. Am I clear here? Now, एक और amendment हुआ था 2016 में. उसके बाद ये clause भी उसमें insert हुआ था, that is about crèche facility. Okay. Crèche, I think everybody knows what is crèche. Every establishment having 50 or more employees shall have the facility of crèche. ठीक है. आपको पता है फैक्ट्रीज एक्ट में कितना है? कैन एनीबडी आंसर मी? फैक्ट्रीज एक्ट में कितना है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर मी. फॉर हाउ मेनी एम्प्लॉइज, वुमेन एम्प्लॉइज, फैक्ट्रीज एक्ट प्रोवाइड द क्रेच फैसिलिटी? 30. या Ma'am, 30. 30. 30. या वेरी गुड हिमा. ओके. सो यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट के अकॉर्डिंग इट इज 50. ओके. सो यू शुड नो द डिफरेंस. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. इफ यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम द मैटरनिटी बेनिफिट then it is 50. Okay. So every establishment having 50 or more employees shall have the facility of crèche. Distance as may be prescribed either separately or along with the common facilities. अब जो डिस्टेंस है क्रेच कितने डिस्टेंस पे बनना चाहिए, इट हैज टू बी प्रिस्क्राइब्ड. ओके. इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन and whether it will be separately or along with the common facilities. Okay. It has to be applied accordingly. Right. Now coming to the next slide. Dismissal during absence of pregnancy, section 12. Now this is what we are talking about. Dismissal, that means the employer cannot dismiss. Can you mute yourself if anybody is has? Can you all mute yourselves? Okay. So when I talk about dismissal during absence of pregnancy, this means when a woman absents herself from work in accordance with the provision of this act, it shall be unlawful for the employer to discharge or dismiss her during or on account of such absence, or to give notice of discharge or dismissal on such day. Suppose if the woman is under the maternity benefit and if she is in leave, ठीक है, वो absent है because she is under this leave of maternity. In that case the employer cannot give her the notice of discharge or dismissal. That means employer उसको निकाल नहीं सकता या निकालने के लिए कोई notice नहीं दे सकता. He cannot discharge or dismiss the particular woman. ठीक है. Any woman deprived of maternity benefit or medical bonus, जो भी woman जिसको maternity benefit या medical bonus नहीं मिला, या फिर ऐसे कोई notice मिलता है employer की तरफ से regarding the discharge or dismissal during or on account of absence from work, may within 60 days, वो जो woman है जो deprived है, क्या चीज की deprived है? She did not get the benefit which she should get for the maternity from the employer. If she did not get the medical bonus, okay,
or if she gets any notice of discharge or dismissal from the employer side regarding her absence of work during this maternity period, what that woman can do is, the woman within 60 days from the date on which order of such deprivation or discharge or dismissal is communicated to her, appeal to such authority as may be prescribed. She can appeal to the authority, and the decision of the authority will be final. Okay, in that case the decision of the authority will be final. Am I clear here? Okay, so here the main thing which you have to remember is, the employer is not allowed to give any notice of discharge or dismissal during the period of absence of work during the maternity period. And if she gets any such type of notice, or if she did not get any maternity benefit or medical bonus which she should get from the employer, in that case she can within 60 days appeal to the higher authority as the case may be, and the decision of the authority, after scrutinizing everything, the decision of the authority shall be final. Okay, now coming to no deduction of wages in certain cases. Okay, section 13, that means from the wages you cannot make certain deductions. No deduction from the normal or usually daily wages of a woman entitled to the maternity benefit under the provision of this act shall be made. That means कुछ डिडक्शंस जो है वो नहीं कर सकते हो आप डेली और नॉर्मल वेजेस से. दैट मींस यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एनी डिडक्शंस. Okay, from your point of view, like if the employer thinks that they will make certain deductions, they are not allowed to do it. Okay, so no deduction from the normal and usual daily wages of a woman entitled to maternity benefit under the provision of this act shall be made. Then comes appointment of inspectors, section 14. These all are very simple things like that. Under according to section 14, the appropriate government, you all know that who appoints the inspector in maximum acts. Here the appropriate government may, by notification in the official gazette, appoint such officer as it thinks fit to be inspector for the purpose of this act, and may define the local limit of the jurisdiction within which they shall exercise their function under this act. That means who will appoint the inspector? Only the thing which you have to remember here is, the appropriate government will appoint the inspector. Okay, and he will only decide the local limits of the jurisdiction, the authority which has to be assigned to him, within which they shall exercise their functions. Now coming to powers and duties, which is not very important, but still I'm just giving you the gist. What power the inspector will have, we have already done it in the Factories Act and other act also. Here what happens is, the authority, the inspector, they have a right to question the person who are working in the organization. ठीक है, उसको एक क्वेश्चन करने का राइट है, those who are involved in the organization. The inspector can ask the presentation of registers, records and notices required to be kept or exhibited by or under this act, and required their production for inspection. ठीक है, तो इंस्पेक्टर कैन आस्क द प्रेजेंटेशन ऑफ द रजिस्टर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर है, रिकॉर्ड्स है, नोटिसेस है, दे कैन आस्क इट फॉर द ऑडिट पार्ट. ओके, दे कैन आस्क इट फॉर द इंस्पेक्शन पार्ट. ओके, it can also enter the organization at the reasonable times. That means the inspector can enter the organization at the reasonable times with such assistance. They can bring the assistant along with them, and they can question the person there. Okay, and who will be the assistant? If any, being person in the service of the government or any local or other public authority. The one who can enter along with the inspector should be either in the service of the government or local or public authority as he thinks fit. Any premises or place where women are employed or work is given to them in an establishment for the purpose of examining any registers, records and notices required to be kept or exhibited by or under this act, and required the production for inspection. तो यहाँ पे आपको मेन चीजें क्या है, पावर क्या है इंस्पेक्टर का, वो ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी आ सकता है, रीजनेबल टाइम देख करके अपने साथ असिस्टेंट्स को ला सकता है. और असिस्टेंट्स कौन होगा, या तो गवर्नमेंट सर्विस करने वाला कोई होगा, या कोई पब्लिक अथॉरिटी में काम करने वाला होगा. और वो लोग रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, नोटिसेस कुछ भी इंस्पेक्शन के लिए मांग सकते हैं, और एम्प्लॉयर को वो उनको हेल्प करना होगा. एम्प्लॉयर हैज टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द इंस्पेक्टर. And another one is, examine any person whom he finds in any premises or place and who he has reasonable cause to believe is employed in the establishment. He can examine any person. जो भी person इंस्पेक्टर को लगता है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, उसको वो क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है. ठीक है.
नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज पेनाल्टीज. ठीक है, पेनाल्टीज में क्या है, दो मेन पेनाल्टीज है यहाँ पे. पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट बाय एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 21 एंड पेनाल्टी फॉर obstructing इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 22. एक है कि इफ एनी एम्प्लॉयर फेल्स टू पे एनी अमाउंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट टू अ वुमन एंटाइटल्ड अंडर दिस एक्ट, और डिस्चार्ज और डिसमिसेस, अगर कोई एम्प्लॉयर ने डिस्चार्ज किया, डिसमिस किया वुमेन को फॉर एब्सेंस ऑफ वर्क अंडर द पीरियड, मैटरनिटी पीरियड, और if they fail to pay any amount, then they will be punishable for the imprisonment which shall not be less than 3 months but which may extend to 1 year, and with a fine which shall not be less than 2000 rupees but which may extend to 5000. ठीक है, इसके लिए I have given the chart here. Okay, penalty for contravention of the act by the employer, पेनाल्टी फॉर obstructing इंस्पेक्टर, सेक्शन 21, सेक्शन 22. अभी जो मैंने बताया 21 का जो है, दिस आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर. imprisonment which shall not be less than 3 months but which may extend to 1 year, fine not less than 2000 which may extend to rupees 5000. second one is penalty for obstructing inspector, section 22. obstruction में क्या क्या आता है, whoever fails to produce on demand, suppose इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे रजिस्टर देखना है या मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंड इफ द एम्प्लॉयर फेल्स टू प्रोड्यूस इट, अगर एम्प्लॉयर उसको देने में नाकामयाब होता है या देना नहीं चाहता, नहीं देता है जो उसके कस्टडी में था, या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है, तो इन दैट केस व्हाट इज द imprisonment? imprisonment is up to 1 year. Sorry, imprisonment is up to 1 year and fine which may extend to rupees 5000 or with both. Okay, so with this I have completed many maximum all the sections of the maternity benefit which were important to you for your this thing course. Okay, so in the next class what I'll be doing is we will be doing some few amendments, okay, for the maternity benefit which I'll be taking for first 5 to 10 minutes, and after that I'll be doing MCQs. Okay, MCQs only from the Maternity Benefit Act 1961. So in the next class what will we do, we will do the few left out topics including the amendment, and along with this we will be doing the MCQs, multiple choice questions, expected questions from Maternity Benefit Act. Am I clear here to everybody? Okay, so thank you so much to everybody.